Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Let's talk about a bit about power. मुझे ये भी जानना है कि आपको पावर पता है, ठीक है? So पावर पता है आपको? क्या होता है? Rate of doing work or rate of providing energy over time. Very good. Rate of supply of energy over time. तो रेट बोल दिया पहले, रेट लगा दिया मैंने। तो क्या होता है? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकंड और वाट, एंड आई होप जूल पर सेकंड और वाट्स आपने बता दिया, यूनिट, ठीक है। पावर दो तरीके का होता है, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। एनीथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन, क्योंकि जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी सप्लाई हो रहा होगा अपॉन टाइम, ओवर टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर इज PE by dt or PE by dt, ठीक है। So this I can write as F dot dr upon dt, which can be written as F dot p, dot product of force and velocity. Yes. So if I ask you relationship between power average and power instantaneous, so you know the relationship. Suppose if you want to find, if you have to find out average power from instantaneous power. See why I'm asking this relationship, because we use this relationship a lot in physics. Like we use the relationship between average velocity and instantaneous velocity, average acceleration and instantaneous acceleration, average current and instantaneous current. So wherever there's a quantity defined with respect to t, there's always instantaneous and average values there, and we want to have a relationship between them so that if I have been given instantaneous, I can find out average. So see, we know that power is dw by dt. So dw by dt. So p dt is dw. So w is the integral p dt from let's say time t1 to t2. So I can say that average power is integral p dt from time t1 to t2 divided by t2 minus t1. So this is the relationship. समझ में आया? So what is the relationship between average acceleration and instantaneous acceleration? A dt upon integral dt. मतलब इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, p dt upon integral dt from t1 to t2. Got it, Gurashi? ठीक है। यदि मैं पूछूंगा एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12. Understood?